Hello students, this is the 6th video lecture of chapter 5, the fundamental unit of life, class 9th science. In this video lecture, we are going to talk about cytoplasm. Cytoplasm, plasm, whatever you want to, spell. Now, when I talk about cytoplasm, so suppose if I draw a cell, we just now discussed in the previous video lecture that nucleus is a double membrane body. It's having this is one of the cell body which is double layered membrane. Okay. Apart from this is having pores. We have discussed all these things. Now, the fluid content of the cell is basically nothing but cytoplasm. Okay, so when I say cytoplasm, fluid content of the cell. Okay, here is where the chemical activities occur. केमिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? तो न्यूक्लियस. बट होती कहाँ है? सो केमिकल एक्टिविटीज अकर्स इनसाइड साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म. व्हेन आई से प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. सो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो भी अंदर है, दैट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस फॉर्म्स प्रोटोप्लाज्म. ओके, और साइटोप्लाज्म जो है इज द फ्लूइड कंटेंट. And here is this is cytoplasm is the site for chemical activities. Okay, now the cytoplasm consists of little structures that perform various functions, various activities. These are nothing but referred as cell organelles. Okay, and the cell organelles are of different types. This extension of cell organelles would be in the next video lecture. Right now we would be further focusing on prokaryotes. Rather, I would like to write here difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay, in the previous video lecture we discussed prokaryotic cell. When I say prokaryotic cell, that means primitive nucleus. Okay, so nuclear membrane is absent. Here nuclear membrane is present. Okay, here see, these cell organelles are membrane bound. Whenever you say membrane bound, मतलब क्या? membrane से bounded है. cell organelles membrane से bounded है. So we would be discussing many cell organelles like Golgi body, plastids, which you have already studied in class 8. तो वो उनके आसपास भी मेम्ब्रेन होती है. कुछ डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, है ना. बट व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, उसके पास वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्म or well organized cytoplasm is absent where it is present. Okay, here well defined cytoplasm is present. फिर हम बोलेंगे कि membrane bound
cell organelles are absent. तो प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ठीक है, दैट इज एब्सेंट. इसके पास ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होंगे जिसके आसपास सेल मेम्ब्रेन होगी, नॉट सेल मेम्ब्रेन बट मेम्ब्रेन होगी. वी कैन नॉट से सेल मेम्ब्रेन ना. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी कैन डिफरेंशिएट प्रोकैरियोटिक फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल. दैट इज इसका साइज होता है 1 to 5 माइक्रोमीटर. इसका होता है, if I am not wrong, 50 to 100. Let me cross check. Yes, 5 to 100 micrometer. When I say micrometer, so 1 meter is equal to 10 raised to minus 6 micrometer. Okay, am I going correct? Do you think this sequence is correct? You see, micrometer is smallest unit. Okay, smaller unit है ना. So I would be writing 1 micrometer is 10 raised to minus 6 meter. कंफ्यूज मत होना, जैसे तुम लिखते हो ना कि 1 meter is equal to 100 centimeter. Similarly 1 micrometer is equal to 10 raised to minus 6 meter. ठीक है. फिर एक होता है मिलीमीटर, mm, that is 10 raised to minus 3. Getting? Micro है तो 10 raised to minus 6. So when I say prokaryotic cell, they are generally small, while eukaryotic cell are generally larger than prokaryotic cell. So these are on the basis of size, on the basis of organization of cytoplasm, on the basis of organelles, membrane bound organelles, on the basis of nuclear membrane, presence or absence of nuclear membrane. These are the 4 parameters which you can use to differentiate prokaryotic cell from eukaryotic cell or prokaryotes from eukaryotes. Clear? So prokaryotes क्या organism है. अगर मुझे differentiate करना है, these all are on the basis of या is at the cellular level. सेल्यूलर लेवल पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रोकैरियोटिक सेल रेदर देन प्रोकैरियोट्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट, इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म, ओके, एंड इज लाइटली स्टेन्ड एज आई डिस्कस्ड अर्लियर. ठीक है, इट टेक्स लिटिल स्टेन. कभी भी स्टेन करते और स्टेन के एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे. एक था मिथाइलिन ब्लू, दूसरा था सेफ्रेनिन, आयोडीन. यू कैन यूज एनी अदर stain, but these are the 3 different stains which are mentioned in the textbook and you should remember. Okay, apart from this you have to remember the difference between prokaryotes and eukaryotes. This was all about cytoplasm. In the next lecture we would be starting with cell organelles.